हेलो बच्चों, अब हम करेंगे 5.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बच्चों की थिंकिंग होती है कि बोलते हैं कि इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, सीबीएसई कहां से क्वेश्चन दे दे। इसलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1। विच टर्म ऑफ द एपी इज 121 117 130 एंड सो ऑन। हमें पूछा गया कि इसकी कौन सी संख्या नेगेटिव होगी। जब हम n निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, an को इक्वल टू 0 करते हैं n निकालने के लिए। लेकिन यहां पूछी गई है कि कौन सी टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब an जो है वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, a क्या है 121, d क्या है 117 minus 121 equal to -4. Now an is a plus n minus 1 into d, and this is less than equal to 0. Put these value, this and this. 121 plus n minus 1 into d is -4 is less than 0. अब अगर इक्वलिटी होती, इक्वल होते दोनों, तो मैं इसको क्या उधर लेके चला जाता। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर बोथ साइड या तो ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं। सो सब्ट्रैक्ट 121 फ्रॉम बोथ साइड। 121 प्लस n minus 1 into -4 minus 121 लेस देन 0 माइनस 121। ये कैंसिल हो गया बेटे, क्या बच गया n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन -121। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय -4, both side by -4. What it becomes, n minus 1 -4 डिवाइड बाई -4। और ये इक्वल जो लेस देन का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। जब भी हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें, तो ये जो इनइक्वालिटी का है, लेस देन है तो मोर देन हो जाएगा, मोर देन है तो लेस देन हो जाएगा। ये यहां से हो गया ये, और ये कट गया। n minus 1 is greater than 121 upon 4. n अब दोबारा क्या करेंगे बेटे, add 1 to both side, add 1 to both side. It becomes n minus 1 plus 1 greater than 121 by 4 plus 1. ये कैंसिल हो जाएगा, n is greater than, now taking LCM 4, 121 plus 4, n is greater than 125 divided by 4. Divide it, cut it, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, पॉइंट लगा करके क्या करेंगे बेटा, 0 लगाएंगे, 4 2 जा 8 and 4 5 जा, it means n is greater than 31.25। और 31.25 के बाद जो होल नंबर आएगी that is 32, that is 32, it means n is equal to 32. So first negative number or the number which comes in this AP and that is negative, that is 32 terms. So 32nd term is first negative term और फर्स्ट नेगेटिव नंबर, फर्स्ट नेगेटिव टर्म है बेटा, जो 32वीं संख्या आएगी वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the sum of the third and seventh term
sum of the third and seventh term mean A3 plus A7 of an AP is 6 and this is equal to 6. Now A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. N is 3. A plus 3 minus 1. 2 into D plus 7 A7. A plus 7 minus 1. 6D equal to 6. 2A plus 8D equal to 6. Or divide both sides by 2. A plus 4D equal to 3. Now what is A? A equal to 3 minus 4D. This is first. Now according to second condition, their product means A3 into A7, this is equal to 8. Their product is 8. Find the sum of first 16 term. We have to find S16. ये फाइंड करना है. अब A D आएगा तभी तो S16 आएगा. वहां तो सिर्फ N गिवन है, that is 16. Now A3 is A plus 2D into A plus 6D equal to 8. If we put value of A from first, put value of A from first in second. From first in second. What it becomes? 3 minus 4D plus 2D. What is A? 3 minus 4D plus 6D equal to 8. This becomes 3 minus 2D, 3 plus 2D, and this equal to 8. Now A minus B, A plus B mean A square minus B square equal to 8. This becomes 9 minus 4D square equal to 8 minus 4D square equal to 8 minus 9 minus 4D square equal to minus 1. This is cancelled out and D equal to 1 by 4. D square is equal to 1 by 4 or D is equal to plus minus 1 upon 2. Now case 1. If D is equal to 1 by 2, D is 1 by 2 and A is equal to, if D is 1 by 2, what is A? A equal to 3 minus 4 into 1 by 2. 3 minus 2 is equal to 1. Second case, if D is equal to minus 1 by 2. Minus 1 by 2, then what is A? A is equal to 3 minus 4 into minus 1 by 2. 3 minus 1 into minus plus 2. This becomes 5. Now we have to calculate S16. For S16. For S16. N is equal to, if D is 1 by 2 and A is equal to 1. D is 1 by 2 and A is 1. For S16, N is equal to 16. So S16 is equal to N by 2. 16 by 2 into 2 into A. A is 1 plus N minus 1. 16 minus 1. This is 15 into D. D is again 1 by 2. Now 2 8 ja 8 into 2 plus 15 by 2. 8 into 2 is LCM. 4 plus 15. It becomes 8 into 19 upon 2. 2 4 ja. This becomes 76. If
a is equal to d is equal to -1/2 एंड a इक्वल टू जब d क्या था -1/2 था तो a कितना आ रहा है 5 देन a 16 और s16 is equal to 16/2 into 2 into a is 5 plus n minus 1 16 minus 1 15 into d is -1/2 8 into 10 minus into plus minus 15/2 it becomes 8 into 2 is LCM upon 1 this 20 minus 15 and this becomes 8 into 20 minus 15 is 5 divide by 2 2 4s are and this is 5 into 4 is 20 s16 is 20. Now in this question तीसरी और सातवीं संख्या का जोड़ दे रखा था, तीसरी और सातवीं संख्या का मल्टीप्लाई दे रखा था। हमने तीसरी और सातवीं संख्या के जोड़ से a और d में रिलेशन निकाल ली, फिर वो a की वैल्यू उनके मल्टीप्लिकेशन में रख दी, वहां से d की वैल्यू निकाल दी, d की वैल्यू 1 में रखी a निकल गया, फिर d की वैल्यू दूसरी वैल्यू 1 में रखी तो दूसरा a निकल गया। इस तरह हमारे पास 2 d हो गए और 2 a हो गए दोनों के लिए और n 16 हो गया, तो दोनों के लिए s16 और s16 फार्मूले में रख के कैलकुलेट कर दिया। Pause the video to note it down. Question number 3. A ladder has rungs 23 cm apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 cm at the bottom and 25 cm at the top. If the top and the bottom rungs are 2 and 1/5 meter apart, इस तरह से हमारे पास क्या है बेटे, एक लैडर है, ये इस तरह से इसके बीच में रंग्स लगे हुए हैं और ये टॉप और बॉटम का जो रंग्स है ये 2 and 1/2 meter यानी 5/2 meter apart and the distance between two consecutive rungs is 25 centimeter. Length of first rungs is 45 centimeter and last is 25 centimeter. We have to find the length of wood required for the rungs. This plus this and then plus this. How many rungs are used in this ladder? Number of rungs. Question number 3. Total distance between first rungs and last rungs, that is 2 and 1/2 meter. This is equal to 5/2 meter and this is equal to 5/2 into 100. This is equal to 250 centimeter. And number of rungs, used equal to this 250 divided by distance between two consecutive rungs 25 plus 1 mean this starting वाला या एंड वाला, किसी एक को तो ऐड करोगे ना, कहीं से भी स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना, वो तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब देखो दिस इज 10 plus 1 11 rungs. Now what is A? A is 45
What is AN? This is 25. This is A and this is AN. And what is D? D is this distance between two rungs, or it cannot be used in this because we have A and AN. What is N? N is equal to 11. So S 11 equal to, when we have A and AN, then the formula is N by 2. N by 2 into A plus AN. When A and AN is given, we can use N by 2 into A plus AN. 11 by 2 into this 70. Divide this 35. And it becomes 11 into 35. This becomes 35 1 the 35, 35 1 the 35 plus 3, 38, 385 centimeter. Total length of the 11 rungs used to make this ladder. Now question number 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. 1, 2, 3, 4, so on, and last is 49. So that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house x. यहाँ पर बीच में कोई हाउस है बेटा x. इस x से पहले वाले हाउस x माइनस 1. सो इसकी लास्ट टर्म क्या है x माइनस 1, और इससे अगली क्या हो जाएगी x प्लस 1, देन x प्लस 2, और लास्ट इज 49. We have given the number of houses preceding the x. Sum of the number of houses preceding the x is equal to the sum of the houses following it. Number of houses following it. इससे पहले वाले houses का और इससे आगे वाले houses का जो sum है वो बराबर है. मीन यहां से x माइनस 1 तक, यानी कि एक AP बन गई आपकी 1 2 3 4 x माइनस 1, और दूसरी AP बन गई आपकी x प्लस 1 x प्लस 2 49. अब यहां जो इसका s ऑफ x माइनस 1 और s ऑफ 49, सॉरी नॉट 49, 49 माइनस x, यहां से और यहां तक के जो हाउस है वो 49 माइनस x है. 49 में से x माइनस हो गई. अब इसको देखो भाई, यहाँ पे x माइनस 1 ये निकालना है और यहाँ पे ये निकालना है. दोनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं. अब हम पहले इसको निकाल लेंगे. व्हाट इज, यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है. इस तरह यहाँ भी फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है. तो हम फार्मूला यही यूज करेंगे, n by 2 a plus an. n by 2 मीन x minus 1 by 2 into 1 plus x minus 1. यहां पर भी हम क्या यूज करेंगे भाई, 49 minus x by 2 into x plus 1 plus 49. अब ये दोनों ही क्या है, इक्वल है. हम इन दोनों को इक्वल रखने हैं. x minus 1 by 2 into, ये क्या बन जाएंगे, ये तो कट गया और यहां क्या आ गया भाई x इक्वल टू, यहां से देखो 49 by 2 into x प्लस 50. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. अब ये क्या बन गया, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस x. When we multiply x with this x minus 1, x
minus 1. X minus x, it becomes x minus x. Now here equal to 49 into x, 49x plus 49 into 50 49 minus x into, sorry, minus x is here. So we have to multiply 49 minus x with x plus 50. This x plus 49 plus 1, x plus 50, and this is 49 minus x. Multiply this. 49x plus 49 into 50 minus x square and minus 50x. X square minus x. Now taking this x square to this x side, x square plus x square equal to this x to this side, x plus 49x plus 49 into 50 minus 50x. This becomes 49 plus x, 50x minus 50x plus 5 9 ja 45, 5 4 ja 20 plus 4, 24, and this becomes 2x square. This is cancelled out and x square is equal to 2450 upon 2. X square equal to 1225. This is 1225 is 35 into 35 and this is x square. So x equal to 35. X equal to 35. Let's do question number 5. A small terrace at a football ground comprised of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and trade of 1/2 meter. देखिए इस तरह से है. इसकी जो लेंथ है दैट इज 50 मीटर और जो उसकी हाइट है, ये जो हाइट है ये है इसकी 1/4 और ये जो इसकी ये वाली जो साइड है, लेंथ हाइट एंड ब्रेथ इज 1/2 मीटर. नाउ ये फर्स्ट वाली जो पौड़ी है वो उससे नेक्स्ट वाली पौड़ी में क्या हाइट बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/4 इस तरह से. ये 1/2 ही रहेगी, ये 50 ही रहेगी, लेकिन ये क्या होगी 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/4 प्लस 1/4 अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/4 1/2. तो फर्स्ट स्टेप first step length is 50 meter, breadth is 1/2 meter and height is 1/4 meter. What is volume? Volume of first step is equal to length into breadth into height, and this is equal to what is length? Length is 50. What is breadth? 1/2. And what is height? 1/4. 25. This becomes 25/4. This becomes 6.25. Now for second step,
what is L? L equal to 50 meter. What is breadth? It is also 1 by 2 meter. But what is height? For second step, 1 plus 1 by 4 plus 1 by 4, it becomes 1 by 2. 1 by 2. So volume of second step. This becomes length into breadth into height. Height equal to 50 into 1 by 2 into 1 by 2. 25. This becomes 25 by 2 and it becomes 12.5 meter cube. Meter cube. For third step. For third step, what is L? Again 50 meter. What is breadth? Again 1 by 2 meter. But what is height? Height is increased for third step. 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. 1 by 4 फर्स्ट के लिए 1 by 4 plus 1 by 4. सेकंड के लिए थर्ड के लिए फिर 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4. It becomes 1 plus 1 plus 1 3 by 4. 4 meter. Now volume of third step. This becomes length into breadth into height. This is 50 into 1 by 2 into 3 by 4. This becomes 25, 75 by 4. And it becomes 18.75 मीटर क्यूब. जब हम 75 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 3 4 8 जा 32, 2 4 7 जा 28, again 2 and taking 0 7 5 जा 20, 18.75. Now it becomes this becomes an AP. This becomes an AP, and AP is first term is 6.25, second term is 12.5, and third term is 18.75. And 2, how many steps? 15 steps to 15 terms. Or 15 steps. What is A? A is equal to 6.25. What is D? 12.5 minus 6.25. This is equal to 6.25 meter. And what is N? This is 15. So S 15 equal to 15 by 2 mean n by 2. S n equal to n by 2 into 2 into A. A is 6.25 plus n minus 1. 15 minus 1 14 into D. What is D? 6.25. Now this equal to 15 by 2 into, when we multiply 2 into 6.5, this becomes 12.5. Plus. Now multiply this, or we also take 6.25 common, and 14 plus 2 16 into 6.25. So multiply 14 5s are 70 0. 14 5s are 70, 14 to 28, 28 plus 7 35. Or 14 6 is 84, 84 plus 3 87, and this becomes 80.5
87.5. Now add 15 by 2 into 5, 10, 7 plus 1, 8 plus 2, again 10. 8 plus 1, 9, 9 into 9 plus 1, again 10. This becomes 100. Now cancel out with 50. This becomes 15 into 50 equal to 750 meter cube. Volume of that terrace of 15 steps